Ladakh was first opened to tourism in 1974, and in that first year we had about 530 tourists visiting us, and today we get over 400,000 tourists, and that also in a short span of 4 to 5 months. So most of the income from that growing tourism was going to hoteliers, travel agents, and taxis, and all of that, and people in remote villages who were suffering a lot because of these livestock depredation and many other issues, they did not get anything from this growing tourism. When we went to some of these remote villages and asked them, what are you getting anything out of the growing tourism? They said, no, we don't get anything. We just see these people passing by and all we get is a pile of garbage at the end. One day, a woman in the Hearth National Park suggested that these trekkers and these tourists, so instead of camping, why not they stay with us in the homes? Otherwise, a group of some 20 trekkers would take some 10-15 horses to carry their camping gear. And so if people stay in the homes instead of camping, it will take away the pressure of these additional animals, the pack animals coming in from outside and grazing in these areas. So it benefits the wildlife and it benefits the people in terms of generating some income, and it also benefits the tourists because many tourists come to see the local culture, and there cannot be a better way of learning about local culture than staying with people and seeing how they live on a day-to-day basis. गांव में लाइफ बहुत अच्छा है जी। बाकी लोग को ये ज़्यादातर ये देखता है जी, जहाँ पे गाड़ी हो, जहाँ पे मार्केट हो, जहाँ पे ये हो, वो सब देखता है। ये गांव में नहीं देखता है। जैसे कि मार्केट में मिल गए ऑर्गेनिक है बोलता है ना जी, है कि नहीं क्या बताए? हमें इधर मिलता है ना, बिल्कुल यहाँ से जड़ से निकालो, ये ऑर्गेनिक है, हम लोग को देखा है, हम लोग खाता है ये, इसी को पूरा यहाँ से निकलता है, हमें अच्छा लगता है जी। खेती भी पूरा लगाते हैं, इसको भी संभाल के रखते हैं, पौधे वौधे भी लगाते हैं, तो टाइम पास भी है, अच्छा भी लगते हैं, तो अपना बॉडी के लिए भी अच्छा है। सुबह उठो, फिर खाना खाओ, फिर कहीं पानी वानी लगा दो, फिर ये सब को संभाल के रखो, है ना जी। तो अगर हम लोग अभी नहीं संभालेगा तो जब दूसरे जनरेशन में भी नहीं संभालेगा, फिर बिगड़ते जाएगा जी। फिर ये सब आप कुछ सालों में तो ये सब देखने को भी नहीं मिलेगा, पता तो क्या होना है ना जी, बस ऐसे बिगड़ जाएगा। अभी हम लेह में टूरिज़्म का फ़ायदा बहुत ले रहा है, गेस्ट हाउस चढ़ रहा है, होम सिटी चढ़ रहा है। इसी तरह हमारा गांव में भी ऐसे फ़ायदा होगा तो हमारे लिए थोड़ा खुशी का बात है और थोड़ा इनकम भी आएगा। इधर आके होम सिटी में रुकेगा तो कि हमारा गांव में बहुत सारे देखने का चीज़ है, इसीलिए फिर हमारा पहाड़ी थोड़ा आगे टूर करने के लिए एक दिन के लिए जाएगा तो पहाड़ी में जाने से भी बहुत सीन और ऐसा देखने के लिए है जी। वो स्नो लिपर्ड भी कभी कभी देखने को मिलता है। फिर यहाँ कई जानवर है, शंकु भी होता है, लोमड़ी होता है, खरगोश होता है। फिर इसी तरह ये हम रिदाक बोलता है ना, हमारा रिदाक बोलता है, वो तकरीबन सामने रोज़ देखने के लिए होता है।
हमारा बटर जो है पहले फ्रिज नहीं होते जी, तो बटर इसमें रखते हैं। तो घी में बटर रखेगा ना, बटर बिल्कुल फ्रेश रहता है और 1 साल भी रख सकते हैं इसको, कुछ ख़राब नहीं होता है जी। फिर से बटर जो जितना अपने गाय का बटर जो है वो गर्मी में बटर ज़्यादा आता है, तो हम लोग इसमें भरकर फिर ये गेहूँ के बीच में स्टोर करके रखते हैं। गेहूँ जो है अभी हम लोग ने ये बैरल में रख दिया, पहले ज़माने में अंडरग्राउंड करके नीचे रखते हैं, उससे और ठंडा होता है जी। जड़ी बूटी जी ये पियाज की जगह में यूज़ करते हैं। ये ऐसे ये पहाड़ से हो या अपना घर के एरिया में निकलते हैं, खुद पर खुद ये निकलते हैं, जड़ी बूटी ये निकलते हैं, इसको उठा कर लाते हैं। ये जो है उसका फूल है, ये तो उसका पत्ता जैसा ना वो है, तो पत्ते को भी ये बन सकते हैं। इसको पीस के फिर बनाते हैं, फूल वाला अच्छा होता है। इसको पीसते हैं, अभी थोड़ा सा ऐसे सुखाते हैं, उसके बाद पीसते हैं, पीस के फिर ऐसे गोल गोल करके सुखा के रखते हैं। तब हम लोग इसको 1 साल 2 साल भी ख़राब नहीं होते। हम लोग तो पहले जो जब मैं छोटी था उस टाइम यूरिया बोल के खाद आता है जी बाहर से। अभी तो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी यूरिया का खाद जो है वो कैंसर का बीमारी का चांस है, यूरिया खाद अच्छा नहीं है। अभी सबको ये पता चला कि यूरिया ठीक नहीं है ना जी, तो इसलिए हम लोग ने यूरिया बंद कर दिया। अभी तो बिल्कुल 100% हम लोग अपना गाय का खाद है, ये सब क्या बोलते हैं बकरी है, हमारे पास याक भी है जी थोड़ा, तो याक का खाद। Tea, yeah? 3 teas. Which tea? Tell me which one. Yeah, these are the option. The kava. Kava, 3 kava, 2 tantan, right? Yeah. Okay, yeah. Preeti, थोड़ा सा आ जाओ ना। 3 kava, 2 tantan. 3 kava, 2 tantan. 3 kava, 2 tantan. Yeah, I was telling about the ingredients, right? So in Ladakh, most of the ingredients are like wheat, made out of wheat and barley. So all the food that you have is made out of those two. And apart from that, three. Yeah. So most of the dishes that are made out of wheat or barley. So rice is also not part of culture. It's only came like since the army and road came, then rice was introduced and people started having rice. Otherwise, it will be sattu, roasted barley flour. So the roasted barley flour, so it is like a staple food here. So people used to be like working in the field or going out in the pasture land with the sheep, no? So they'll just carry little bit of sattu and they'll just make tea and mix it like a kolak, and then chashul they will have it. Or paba is also like a dish made out of sattu and other grains. So yeah, sattu is like staple food. People will just carry, it's easy food. You can take it anywhere, just mix it with water, tea, or have it like that only. So that is one of the main thing that is consumed here. Apart from that, like for sweet, apricot, like apricot and apple are only two fruits that used to grow traditionally and even now. And there'll be few fruits, but now apricot, so they will dry it. Fresh apricots also consume like that, and dry apricot is also preserved, so that even in winters, the harsh climate, so it will give you vitamins needed. And even now, if you go to the village and you'll see people drying vegetables, because it will be used in winter to add in thukpa or stew.
ये तो सुनील डिपोट वाले ने बताया, हम होम सिटी वाले तो 9 घर है, तो बताया उसमें से कुछ पैसा गेहूँ वाले को भी, जिसके पास होम सिटी नहीं, मतलब गेहूँ के बीज में भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जो भी गैस रुकेगा उसमें से 10% बीज में आना चाहिए, गेहूँ वाले के बीज में। हम इंश्योरेंस लेते हैं पूरा गाय और घोड़े में। गाय को पर मंथ 20 और घोड़े को पर मंथ 30 रुपीज़ फिर सालाना। जब वो कोई सोनो लिपाट या वुलो मार देंगे तो गाय को देते 1500 और घोड़े को 2000। अगर ये अपना कुछ डिजीज़ की वजह से मार जाएंगे तो गाय को देते हम 1000 और घोड़े को 1500। ऐसा करके सबने इंश्योरेंस किया हुआ है गाय और घोड़े को। फिर वो पैसा बीज में है, गेहूँ के बीज में जमा है। इंश्योरेंस करेंगे तो पैसा भी हो जाएंगे, फिर सुनो लिपाट या वुलो काट देते हैं ना, तो घर वाले को तो थोड़ा फ़ायदा है। नहीं तो इंश्योरेंस नहीं तो कुछ भी मिलता नहीं। पहले में नहीं था, ये एनसीएफ ने किया है। कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम का एक फ़ायदा ये है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो वो उन लोगों का भी कहना है जैसा इजीली उनको मिल जाता है। कम्युनिटी नहीं तो कंजर्वेशन नहीं है। जब तक कम्युनिटी विलिंग नहीं होगा, चाहे हम जैसा हो, डिपार्टमेंट्स हो या जो भी एनजीओस हो, कितनी भी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती लगा लो, कंजर्वेशन अल्टीमेटली कम्युनिटी की राज में। तो हमारा मेन कोशिश ये रहा है कि कम्युनिटी को इस कंजर्वेशन में किस तरह से इन्वॉल्व करें, वो थोड़ा सा। Localization, why is it important in an era where globalization is considered the trend? It's not a change that's happening in Ladakh. When we did World Localization Day, I had a chance to speak to someone in Brazil and someone in Korea. They're also going through the same changes and they're also trying to come up with a lot of alternatives. When I spoke to people from Vikalp Sangam, there are initiatives, let's say, indigenous communities in different parts of countries that taking initiative, women coming together, taking initiatives. We were thinking of doing an exchange program in Leh and those community. I mean, that's how I think we were able to understand that indigenous communities, like indigenous knowledge is vanishing, and I mean, if we don't save it. On ground things are very different. You can't say stop. You have to take like small steps at a time. You have to come up with alternatives in order to stop one thing. Now what is happening is that because of less opportunities in the villages, all the youth are coming out and settling in Leh in the cities and all, and so that is putting pressure on the ecology of Leh, for example. Of course the homestays are run by the women, but we have been providing training to some of these youth in guiding tourists in the villages instead of coming here and looking for a job opportunity. It's part of the rural tourism initiative now. अभी लोगों को ये पता नहीं था कि अपना खेती से क्या क्या निकलता है, कैसे इसको संभालना है, कैसे खाना है, ये कितना अच्छा चीज़ है ना जी। अभी बच्चे लोग को ये देखता है, टीवी में थोड़ा फिल्म दिखाओ, ये नेट में फेसबुक में ये सब दिखाओ, वो सब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है ना जी। तो बाहर एक दो आदमी आज घूमने के लिए आएगा तो उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, मैं भी घूमने के लिए जाएगा, मैं भी बाहर चला जाएगा, ये सब अच्छा है, ये है, वो है, सोचता है। मगर रियली हम लोग देखेगा तो यही सबसे अच्छा है।